Yes, so where do we start? So sir, first formal welcome on this forum. DSPPL की तरफ से अजीत सर का आज के ये दत्त जयंती फुल मून सेशन में तहे दिल से स्वागत है। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम सबकी ओर से। सबको दत्त जयंती की शुभेच्छाएं। यस, और सबको दत्त जयंती की शुभेच्छा DSPPL की ओर से भी। हम सब लोगों को अजीत सर पता है, पर फिर भी सर ये सेशन हम स्पेसिफिक DSPPL के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और उसके बाद ये सेशन होने के बाद वो यूट्यूब पे भी जाएगा, जहाँ पे शायद हमारे परिवार से न जुड़े हुए, रेकी विद्या निकेतन से जिन्होंने रेकी नहीं सीखा, ऐसे भी लोग आ सकते हैं। सो ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ अजीत सर। सो अजीत सर का जन्म दिसंबर 1952 में मुंबई में हुआ। राम मोहन इंग्लिश स्कूल से उन्होंने एजुकेशन लिया, और उसके बाद प्रेस्टिजियस एल्फिंस्टन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से उन्होंने 1972 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मास्टर इन साइंस इन केमिस्ट्री विथ न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री ये कंप्लीट किया, और उसके बाद प्रेस्टिजियस जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से सर ने मास्टर्स डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट किया, और बीच में उन्होंने इंडियन मर्चेंट चेंबर्स से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया था। उसके बाद अजीत सर ने नौकरी भी की। ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब एज अ प्लानिंग एग्जीक्यूटिव इन 1975. Subsequently, he worked with various other organizations and prestigious groups like Mafatlal Group, Tata Group, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया, जॉब किया। और उसके बाद इन 1985 अजीत सर ने उनका खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंसी इन द नेम ऑफ सिनर्जेसिक ये स्टार्ट किया, which was in the field of market research and business consulting. आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर अजीत सर ने अंडर दिस सिनर्जेसिक he has done more than 250 market research projects for his clients in India and abroad. और अजीत सर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रहे हैं। उन्होंने कंपनीज फॉर्म किए थे लाइक सिनरटेक प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट वाज अ वेल नोन नेम इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इन वेरियस बिजनेस फील्ड्स फ्रॉम कंपनीज अब्रॉड। अजीत सर ने और भी एक कंपनी उनकी थी, गोल्डन एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके, जो 1986 में उन्होंने प्रीमियर कंपनी खड़ी की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, एंड वहां पे उन्होंने गोल्डन पैकेज एंड बिजी स्पॉट का एक नया ही कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। तो इतना सारा काम करने के बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में एज एडवाइजर, एज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानिंग कंसल्टेंट, ये सारा करने के बाद अजीत सर ने ये सारा छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू दिस स्पिरिचुअल कॉज। अजीत सर लर्नड Usui system of Reiki healing therapy in 1994, and he was declared as a Reiki master on 23rd January 1997. और उसके बाद जिस माध्यम से हम सब लोग जुड़े, अजीत सर ने रेकी विद्या निकेतन की स्थापना की। रेकी विद्या निकेतन के 18 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स आज इंडिया में हैं। आउटसाइड इंडिया US में भी 7 सेंटर्स हैं, और लगभग 40,000 स्टूडेंट्स अजीत सर के अंडर और उनके अदर टीचर्स के अंडर रेकी सीखे हैं। अजीत सर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, हम सब लोगों को पता है, जैसे रेनबो इन द हार्ट, मिराजेस एंड ओएसिस, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, होलिस्टिक पेरेंटिंग, यूथ एम्पावरमेंट, भज गोविंदम, और मराठी में भी उन्होंने बुक्स लिखे हैं, या जीवनाचा महायज्ञ हो। बहुत सारी किताबें अभी इस साल हमें पढ़ने को मिलेंगी, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पब्लिश्ड। रेकी विद्या निकेतन वॉज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट विद अजीत सर फॉर्म, उसके साथ वो एसोसिएटेड है ही आज भी रेकी टीचर करके। उसके साथ ही स्वामी समर्थ चैतन्य ट्रस्ट के एज अ ट्रस्टी, स्वामी समर्थ सेवक प्रतिष्ठान के एज अ गाइडिंग फोर्स, DSPPL अंडर विच वी आर होल्डिंग दिस टुडेज सेशन, उसके और देवरुख साधक पीठ, ये दोनों संस्था के वो मेंटोर है। ही इज ऑल्सो स्टिल गाइडिंग द सिनर्जेसिक ट्रेनिंग डिवीजन associated with help library. He is also working closely with
not for profit making organizations which are situated in USA, like New Generation Development Inc. and Swami Samartha NFP USA. Sir, thank you very much for coming on this particular forum and giving us an opportunity to have a discussion with you. आपसे बहुत बार हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, सीखी है, उनको जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं हम। तो ये दत्त जयंती के मौके पर हमने सोचा कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपसे ये इंटरेक्शन किया जाए। हमने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, साधकों को रिक्वेस्ट किया था कि आपके जो भी सवाल है आप कृपया सवाल भेजना हमें, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने एक्चुअली वो सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। सो वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आवर ईमेल, और उसी के साथ हम सर शुरू करेंगे आज का ये टॉपिक, जिसका नाम हमने रखा है लाइफ फुलफिलमेंट। जीवन में चाहत रहती है कि कृतार्थ जीवन वो जगह, एक कंप्लीट लाइफ हो, सब चीजें वो उनको सब लोगों को मिले। तो सर उसी से हम ये पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हम आपको पूछना चाहते हैं कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय Sorry, I couldn't get your question. There was some noise. या सो सर पहला सवाल हम वही जो टॉपिक का हमने आज नाम रखा है लाइफ फुलफिलमेंट, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। किस तरह से, किस एंगल से इसको देखा जाए या समझा जाए? Basically, I think fulfillment is about finding yourself, knowing yourself, being peaceful, being in equilibrium with yourself, having come to terms with your own self, being satisfied, samadhan. That is fulfillment. So somewhere being what you are aware, about what you are, that is what the fulfillment is about. No? Knowing that you are already fulfilled is fulfillment. Knowing that you don't have to do anything to get fulfilled further, that is fulfillment. सर पर ये शायद बाकी साधक जो है ना, उनका भी यही अनुभव रहेगा। हम जब आपके साथ रहते हैं, आपका सुनते हैं, या हम आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। वापस जब घर में आते हैं, बहुत सारे साधक मेरे से एग्री करेंगे, और उसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बहुत बार ये कहा भी है, हमें छोटे छोटे भी उपाय बताए हैं। आपका एक फेमस कोट है, मैनेज द मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल विल गेट मैनेज्ड। ये जब सुनते हैं, आपसे कितनी बार सुना है, जब सुनते बहुत अच्छा लगता है, पर जब वापस आते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी के एंगल से दोबारा देखने की कोशिश करते हैं, जिससे जुड़ा ये दूसरा सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी मेक लाइफ रियली साउंड वेरी सिंपल, इजी गोइंग एंड फ्री फ्लोइंग, बट फॉर द वन हु इज इन द मिडस्ट ऑफ केओस इट सीम्स अ डिस्टेंट ड्रीम। मतलब जब वापस आते हैं और हर रोज की जब जिंदगी शुरू होती है, वो स्कूल में जाने वाले बच्चे हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या घर संभालने वाली महिला हो, ऑफिस में जाने वाले मेरे जैसे काम करने वाले प्रोफेशनल्स हो, तो जब हम बाकी ये सारी चीजें करना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं जो आपका मैसेज है उसको उतारने में शायद कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो एंगल से जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कैसे स्विच करे, वो केओस कैसे बंद करे, और ये राह पे कैसे आगे चले। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। Can you repeat the first question first, because the second question was so long? The first question. Sorry. So the first question was basically fulfillment of life. Yeah. Fulfillment of life आप जब बताते हैं, और वहां से जब हम आगे आते हैं और हर रोज के जीवन में उसको डालने की कोशिश करते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी की एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है, ऐसा लगता है। तो कैसे उसको संभाले, कैसे? No, basically, I think the whole problem is in defining the things, wrongly. I think we are defining something as a material word and start believing it is not a spiritual word. So that definition has to be reconnected. I mean, relived, redone. We need to redefine a lot of things in life. First thing, understand कि materialism और spirituality ऐसे कोई होता नहीं. It's only you're in your mind. ये जो wall है, वो mind में गिराना पड़ेगा, बाहर नहीं है. बाहर गिराने के लिए कुछ नहीं। तो कहीं पे ध्यान में रखना कि there is nothing like a material world and there is nothing like a spiritual world. You are the spirit. हम एक आत्मा करके जन्म लिया है, हम परिपूर्ण हैं, हम वास्ट हैं, हम कंप्लीट हैं, और हम जीने के लिए आए।
It's like a rich person going to the tourist, some kind of tourist spot, resort. No, and he has so much that he doesn't have to buy anything anywhere. तो खाली रिजॉर्ट में जिस तरह से पूरी तरह से आनंद उपभोक्ता रहेगा, वैसे जिंदगी में हम रहेंगे, तो that is a fulfillment. When I come in front of all of you and you feel so happy and you feel so happy, that is fulfillment. यहाँ लेन देन कुछ है ही नहीं, ना मैं कुछ आपको देता हूँ, ना आप मुझे कुछ देते हो. We are not expecting anything from each other and still we are happy. No, that is our nature. मेरे सामने आप आ जाते हो तो आपका नेचर बाहर आ जाता है, आपके सामने मैं आता हूँ तो मेरा नेचर बाहर आ जाता है. We meet each other as soul to soul. That is good. No, I think we are trying to look for the fulfillment outside. हमें लगता है कुछ मिलने से हमें fulfillment आएगी. कुछ मिलने की जरूरत है ही नहीं. No, because you are already that. You cannot get what you already are. तो कहीं पे ये right understanding जो आएगी ना, and the ignorance is about that. See, we call ourselves ignorant, which means ignorance means there is the thing but which we don't see. We ignore. So you cannot ignore something which doesn't exist. You can only ignore the things which are existing. Are you getting this point? And somewhere that vastness, that completion is already there. It exists, but we are ignoring that. We are denying that. I think कहीं पे मेरे ख्याल से ये समझ आनी चाहिए. सही समझ, जैसे सही समझ at सही समय is समाधि. गलत समझ at गलत समय is a समस्या. कहीं पे हमें समस्या से समाधि की तरफ जाना है तो सही समझ को खोलना पड़ेगा. और सही समझ एक ही होती है कि मैं पूर्ण हूं. अगर मैं पूर्ण हूं, अपूर्ण हूं नहीं, तो पूर्ण करने की कोशिश क्यों करूं? आर यू गेटिंग दिस? ये पूर्ण करने की कोशिश है ना, उसको मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं. अगर पूर्ण करने की कोशिश करोगे नहीं तो मटेरियल वर्ल्ड नहीं कहोगे उसको. देन योर स्पिरिचुअलिटी कंटिन्यूज. Spirituality is only a thought. Spirituality is only an understanding. Spirituality is only knowing. Spirituality is only wisdom. And not knowing that is material. Not knowing that, not understanding that is material. So somewhere moving from non-understanding to understanding is all that spirituality means. और जब अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है ना, तो सारी डिजायर्स गिर जाती है. और डिजायर्स है ही नहीं तो सवाल ऑफ fulfillment of desires doesn't come. अनफुलफिलमेंट नहीं है तो नैराश्य नहीं होगा. नैराश्य नहीं है तो दुख नहीं होगा. दुख नहीं है तो समस्या नहीं होगी. और समस्या नहीं होती तो समाधि होती है. नहीं, समस्या से दूर रहना है समाधि. सर, तो फिर क्या ऐसे समझे कि डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं? जैसे खुशबू जी ने भी अभी लिखा है. गलत नहीं करते हम. गलत डिजायर में नहीं करते, गलत खाली समझने में करते. एक बार सही समझ आई तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स ऑफ. नहीं, ये सारी जो डिजायर्स वगैरह बैठी है ना, वो एक मान लेना कि एक छोटी सी चद्दर है, उसके ऊपर है. और चद्दर ना समझने की है, चद्दर अहम की है. तो चद्दर फेंक दो तो सब चला गया. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कहीं पे हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं. निकालने की कोशिश में चद्दर को फेंक दो. वो जो वेल है ना, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसके ऊपर सारे बैठे हैं. अहम बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बैठे हैं, हमारी समस्याएं बैठी हैं, हमारी बीमारियां बैठी हैं, हमारा दुख बैठे हैं. सारे का एक ही प्लेटफॉर्म है, ना समझ का वेल, पर्दा. वो पर्दे को निकाल, और पर्दे को निकाल दो. पर्दे के पीछे वही है तुम्हारी निरंतर आत्मा. और जब तुम निरंतर आत्मा को प्राप्त होते हो तो सारी समस्याएं समाप्त होती हैं. आर यू गेटिंग दिस? मराठी था फिर भी सर, डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ तो अपेक्षाएं रहेंगी, कुछ ना कुछ तो चीजें करनी है, कुछ ना कुछ हासिल करना है. मतलब आप जैसे कहते हो वैसे अगर हम मान के चले कि हम पूर्ण है ही ऑलरेडी, तो फिर तो किसी एम्बिशियस की आवश्यकता भी नहीं है. नहीं, रास्ते में जाते जाते 2-4 बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, मुझे भी कैसा कभी भी लगता है उनके हाथ से बैट लेता हूँ, 2-4 शॉट मारता हूँ, निकल जाता हूँ. अब इसमें क्या अपेक्षा होगी? क्या मैंने सेंचुरी बनाई? क्या मेरा पेपर में फोटो आया? क्या मैन ऑफ द मैच हुआ? कहीं नहीं. ऐसा खेल खेलो तो कोई चिंता नहीं है. नहीं, बैटिंग तो करनी है बट कुछ चीज पाने के लिए नहीं करनी. द प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर अ प्लेजर व्हेन वी आर ऑलरेडी प्लीज्ड इनसाइड.
You are trying to seek something second time. ना आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा में एक ही चीज दोबारा उसके ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको फ्रॉड कहते हैं. You are doing a huge fraud with life. When you are already happy, you are trying to seek the happiness again. Same thing cannot be transacted twice. No, you're already happy. अभी क्या चाहते हो? At least don't expect the happiness out of your activity. Do the activity out of happiness. आनंद से जियो, आनंद के लिए मत जियो. अभी अभी कपिल देव ने भी कहा था कि play the game with pleasure. Don't play for the pleasure. Then there's a problem. Then you think for a treasure. Pleasure से treasure तक रास्ता शुरू हो जाता है. Then you start making money. And then you come under stress. Then you will not play in the test. You will play only in the IPL. Because वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है. I think that is where the problem begins. And that is where, I think that's why these people are under pressure. People are under stress. Because हमारा nature है, नेचर आनंद है हमारा, और नेचर के खिलाफ जाना यही स्ट्रेस का मूल कारण है. Are you getting this point? I don't understand why people say that activity will deliver. I mean, whatever activity has to give will give, but आसक्ति मत रखना. Activity will be there. Activity you are performing. But नहीं मिला, it's okay. That's what the activity is supposed to give you anyway. नहीं? So somewhere I think you are seeking for something which you already have. Drop that. And I think everybody will be happy at the end of it. नहीं सर, थोड़ा और activity. Don't drop the activity. See, the only problem. नहीं सर, थोड़ा और मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आना चाहता हूँ. ये हमें कंसेप्चुअली तो बहुत अच्छा समझ में आता है. आप जो nothing like, honestly, I drop the idea of practicality. What you call practical is actually not practical. Otherwise, you would not have been sad. You would have been. जो प्रैक्टिकल कहते हो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए फेलियर्स है. अगर प्रैक्टिकल में आता तो कोई हरता नहीं, कोई दुखी नहीं होता. That means what you call practical is actually impractical. What you call manageable is actually unmanageable. And you are trying to manage as if it's a manageable. मैंने तो कहा manage the manageable. The first step is identify what is manageable. You are jumping directly. Identify what is practical. Practical है तो होना चाहिए ना. और करने के बाद भी हो नहीं रहा, इसका मतलब प्रैक्टिकल था ही नहीं है. That was your perception. See, the most practical thing is being spiritual. Sorry? Because being spiritual is the practical thing. Because you are the only reality. अदर का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा तो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए. Relating with your own self is the easiest thing to do. Relating with others could be difficult. No? A problem is you call it relating with others, you call practical, which is actually not practical. Neither spiritually practical nor materially practical. मुझे वही संदेह है कि अगर प्रैक्टिकल होता तो प्रैक्टिकल हो जाता. प्रैक्टिकल बोलने के बावजूद नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिकल है ही नहीं, आभास है तुम्हारे. Are you getting this? We are still calling it practical, though it has not come into practice. Are you getting this logic? है ना? अगर प्रैक्टिकल होता, तुम्हारा सही होता तो हो जाता अभी तक. करेक्ट. नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा, इसका मतलब प्रैक्टिकल था नहीं. तुम्हारे मन की एक आवाज थी, वो एक परसेप्शन था, and that perception you think is reality, and then you get disappointed for not achieving that. फिर वो क्या चीज है? ये सब समझने के बाद, साधना करने के बाद भी डर लगता है, फियर आती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस आता है. वो क्या चीज है जिससे हम ये बेसिक चीजें भूल जाते हैं? अज्ञान, ignorance about our own self. We are trying to know the world without knowing ourselves. That is the biggest mistake. Understand who is playing the game, and then understand what the game is all about. When you don't know about yourself, you will not know anything about the game. And still we are playing it. It's a play of consciousness. Are you getting this point? So somewhere first understand yourself, know yourself. Yes, Ramana Maharshi बार बार कहते थे, खुद को जानो, नान्यार, know yourself. No, we are doing KYC, know your customer, know your this, know your vendor, know your government, but know yourself. Yeah, come on. Without knowing yourself, you want to know so many things in life. And that doesn't lead anywhere.
Knowing yourself is the only wisdom. That is where the knowledge merges with wisdom, when you know yourself. And when you are in the wisdom, the ocean of wisdom, anything that you do it wisely. That is practicality. When you play the game without wisdom, everything is impractical. And when you play with the wisdom, everything is practical. Are you getting this point? Sir, we have also received several questions relating to relationship. Relationship is also a challenge. Life is all about relationship. एक सवाल मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे आए, पर ये एक प्रातिनिधिक स्वरूप का जो सवाल है, जो रिपीट हुआ है, वो पढ़ता हूँ. Life is all relationship with your family, friends. But these days, why there need to be a lot of efforts to be taken in maintaining this relationship, whereas there used to be old days when the relationship management used to be effortless and natural. तो relationship में भी ये stress आ गया है, तो वो life full. Because there was nothing like relationship management. ये management शब्द है तब से गड़बड़ शुरू हो गई. It is so स्वाभाविक, it is so natural. Relationship is a natural phenomenon. But the question is, if you're not relating with your own self, you cannot relate with anyone outside anyway. तुम जब तक स्वस्थ न हो, तो तुम्हारी कोई भी relationship स्वस्थता में नहीं परिवर्तित. अस्वस्थ इंसान खाली अस्वस्थ relationship पैदा कर सकता है. क्योंकि relationship in that case is only a situation you create. आप क्या ना अस्वस्थ person create a स्वस्थ relationship. मेरे पास ऐसा कोई formula. Basically, you need to be स्वस्थ. You have come to terms with yourself. Then only you can come to terms with the others. नहीं, प्रॉब्लम ये है, पहले लोग स्वस्थ थे, इसलिए रिलेशनशिप वाज मच इजियर. उनके खुद के साथ एक रिश्ता था, इसलिए बाहर के रिश्ते बहुत आसानी से हो सकते थे. उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते थे. आज मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट yesterday only we had a lecture about the communication. The problem is that our communication has created a lot of problems today. And there are 4 kinds of communication: passive, aggressive, passive-aggressive, and assertive. आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घर में, in fact this is backed up by the research now. अमेरिका में रिसर्च किया, 75.1% people who go out for the work actually are unhappy to come back to their home. That is the problem. अपने खुद के घर को लोग डर रहे हैं, क्योंकि खुद को डर रहे हैं. See, problem is that घर is your extension. Are you getting this point? पहले मानते थे कि घर में जाके तुम कुछ भी कर सकते, घर अपना होता है. सिर्फ बाहर तुम्हें सावधान रहना पड़ता है. See, people were fearful outside, क्योंकि धोखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तुम्हें बोलने में संभालना चाहिए, तुम्हें काम करने में संभालना चाहिए, किसी को दुखाना नहीं चाहिए. There will be a breach of the law, you know. So maybe there are a lot of things. घर में law नहीं होनी चाहिए. घर is the only thing where you can talk anything and get away with it. आजकल we cannot do that. नहीं, घर में ज्यादा सजा होती है गलत बोलने से, बाहर बोलने से कुछ ज्यादा होता नहीं. बाहर का कानून फेल हो गया है, लेकिन अंदर का कानून बड़ा डेंजरस होते जा रहा है. That is the problem. When you don't feel like going back home, what relationships are we talking about? That is the problem. क्योंकि हम खुद से अस्वस्थ हैं, हम खुद से खुश नहीं हैं. We cannot relate with our own self. Aham cannot relate with your own soul. That is the first primary relationship. Are you getting this point? और जब हम अस्वस्थ है और हम से हम सारा संसार रचा है, तो संसार में स्वस्थता कहाँ से है? The problem is that, Pranjal, and I feel very sad about it, because home is the only thing which could have managed. That manages relationship and everything. घर में किसको सजा नहीं होता? घर में you didn't have to explain what you said. That was the only place where you don't own any explanation. Are you getting this? There was no accountability for what you did because it was your home. Yes. The problem is the paristhiti has changed. You need more explanations at home than probably explanations outside. Outside you can do anything and get away with it. घर में नहीं जा सकते. So somewhere I think the whole concept of parivar, the whole concept of ghar parivar is getting lost. And ghar और परिवार relationship का केंद्र बिंदु है. Relationship का केंद्र बिंदु हल गया है, डल गया है. Somewhere there's a massive shift, and that is reflecting everywhere in our life. That is the problem. Sir, but is it also because the lack of time? क्योंकि बहुत सारे questions हैं उसमें वो भी है
कि they are not finding time, and I have received this question I from think different age groups. everybody has 24 hours. The priorities are mixed. See, time is a dimension on which you have to set your priorities. तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है. You have a time for eating, you have a time for a bath, you have time to sleep. You should have a time to be good. You have to be time to be with yourself. Meditate करो, खुद के बारे में सोचो, है ना. बिना खुद के बारे में सोचे हुए हम दुनिया के लिए लड़ने के लिए बाहर निकल आए. Are you getting this point? Somewhere we are not managing ourselves at all. So we cannot, if one cannot manage oneself, one cannot manage the world outside. Are you getting this point? हमारी प्रायोरिटीज बदल गई. नहीं, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमको लगता है अन्न वस्त्र निवारा, उसके अलावा कुछ लगता है. प्रेम लगता है, करुणा लगती है, खुद के साथ दोस्ती लगती है. The problem is we are expecting the world to accept you when you're not accepted yourself. Accept yourself, respect yourself, love yourself, be compassionate with your own self. आज हमको खुद के लिए वक्त नहीं है. That is the problem. हम एक्टिविटीज में ऐसे उलझ गए हैं कि हम भूल गए कि एक्टिविटीज ओनली मीन्स टू रीच समवेयर. हमें मर्सिडीज गाड़ी अच्छी लगती है इसलिए हम गाड़ी में ही बैठे हैं. हम भूल गए कि गाड़ी से कहीं पहुंचना है, गाड़ी से मुझे घर में जाना है. सो गाड़ी को प्राधान्य मिला, घर को सेकेंडरी दुय्यम दर्जा मिला, बिकॉज यू लव योर कार. We have forgotten car is only a vehicle, car is only a medium, car is only a tool to reach somewhere. नहीं, हम हमारी एक्टिविटीज में फंस गए. So somewhere I think one has to be very alert and very clear about what is means and what is end. मतलब ये टाइम का सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास जो सवाल आया उसमें वो लिखते हैं, आई एम कंबाइनिंग दिस टाइम क्वेश्चन विद द रिलेशनशिप क्वेश्चन, फैमिली रिलेशनशिप का. वो लिखते हैं सुबह बच्चे उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, जो यंग जनरेशन है वो काम के लिए निकल जाती है, सीनियर सिटीजन्स घर पे रहते हैं पर अभी बाकी फैमिली मेंबर घर पे नहीं है, और शाम को जब वो वापस आते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, बच्चे सोने के लिए गए हैं. और अभी सीनियर सिटीजन को अगर ये यंग जनरेशन के साथ बात करने तो अभी सीनियर सिटीजन का कुछ ना कुछ है, उनका कुछ क्लब है या उनको कुछ टीवी सीरियल देखने. That's exactly what I'm saying. Is your club more important than your grandsons and granddaughters? That's the question. You have an option. Play with the grandsons. Play करने के लिए तो क्लब जाते हो ना. So play with your children. Play with your grandsons. Talk to your children. See, when the quality time is available, you are not there. That's the only problem. You are not there. You decided not to be there. That's what I'm saying. We are avoiding each other under the name of activity. जैसे घर के बहू बेटे काम पे आते हैं तो बुजुर्ग निकल जाते हैं बाहर because they cannot face. They are trying to avoid the conflict because we know कुछ भी कहे तो conflict हो सकता है. Because अस्वस्थ मन है ना, उसको कोई भी input मिले communication का, that is distorted. And we are creating conflicts. 95% of the conflicts are self-created. 5% could be adhidaivik. Baki sab adhibhautik hai. So somewhere I think one has to see into the priorities. I don't understand why people do not have time for themselves. उनके लिए खुद के लिए तो सब कर रहे हो ना, एक्टिविटी खुद के लिए कर रहे हो ना. गाड़ी, बंगला, फैमिली, बच्चे, सब खुद के लिए, दूसरों के लिए है नहीं ना. लेकिन जिसके लिए तुम कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं. Are you getting this point? Give time to yourself. Just look into that. Just have an audit of yourself at the end of the day. सुबह उठ के जरा सोचो कि मैंने आज क्या पाया, कल क्या पाया था, आज मैं क्या करूंगा. We are running without a plan. No, we think that running is everything. We think the activity is everything. The life is not activity. Somewhere I think activities are for us and we are not for activity. I think गलत फहमी है, गलत समझ है. Because we are afraid of sahi samajh. That is the problem. The problem is today not the sansar. We are not qualified to do sansar. जैसे मैंने कहा तुम अस्वस्थ हो तो पहली चीज टालनी चाहिए कि संसार करना. Honestly, I am not against the marriage, but people who are restless should never get married because they're spreading that. People with the corona should never get married because the only thing they will do is spread the corona, dangerous to the society. Now, corona के बदले just replace it with the stress. Are you getting this point? हम कोरोना के बारे में बड़े सतर्क है, स्ट्रेस के बारे में सतर्क नहीं है. पहले तुम स्ट्रेस फ्री बनो.
That's what I always say कि पहले गुरुकुल में गुरु तुम्हें समर्थ बनाता था और कहता था कि समर्थता से संसार करो। कोई गुरु ने नहीं कहा कि संसार को त्यागो। संसार को त्यागना चीज नहीं है। तुम्हारे अज्ञान को त्यागो, तुम्हारी अस्वस्थता को त्यागो, तुम्हारी असहायता को त्यागो, तुम्हारी अकुशलता को त्यागो, तुम्हारी अक्षमता को त्यागो। क्षमता लेकर संसार में उतरे ना, संसार बड़ी सुंदर चीज है। तो पता चलेगा संसार और अध्यात्म में कोई भी फर्क नहीं है। संसार अध्यात्म का ही प्रकार है, अध्यात्म का ही रूप है, इसका अलग मत समझना। Whatever you learn in अध्यात्म, actually you are getting it tested into your संसार। और हर उपनिषद वही कहता है कि संसार का संदर्भ नहीं है तो अध्यात्म समझ नहीं पाओ। The backdrop of संसार is very essential to understand how you are growing on the अध्यात्म। So somewhere I think we have already separated these. Somewhere we are denying ourselves. So कहीं पे ध्यान में रखना कि क्षमता के बिना संसार करना बुरी बात है। तो क्षमता कमाओ। We say no, responsibility without ability is hazardous. And most of us are thinking we are responsible without having ability, without having the attitude, without having the right approach. Are you getting this point, Pranjal? Somewhere have that ability, no? And that ability will come only when you know yourself. You are not aware about your abilities. You are not aware of what things you can do. So what will you do? तुम्हारी खुद की सोर्स एंड रिसोर्स की तुम्हें पता ही नहीं है, तो कैसे जियोगे? दैट इज द प्राइमरी नेसेसरी प्राधान्य जिसको मिलना चाहिए। वो बात है कि मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है वो लेके मैं आता हूं ना संसार करने के लिए। हर एक को जवाब देना पड़ेगा, क्या लेके आया हूं संसार करने के लिए। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू द टेबल? तुमने अशांति लाई, हिंसा लाई, तुमने गलत विचार लाए, नहीं तो संसार गलत होगा। Somewhere we need to carry that divinity, we need to carry that पवित्रता। नहीं, इसके साथ तुम संसार करोगे तो मेरे ख्याल से संसार जैसी दूसरी सुंदर चीज दुनिया में। सृष्टि को भी संसार कहते हैं। और हमारी परिवार, ये जो व्यवहार है इसको भी संसार कहते हैं। नहीं, अनफॉर्चुनेटली दे ऑलरेडी डाइवोर्स्ड। संसार की जो मूल कल्पना है और जो हम जिस रीति से संसार कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज देयर इज नो इश्यूज। पर उसमें भी मतलब हमेशा आप जैसे कहते हो कि खुद पहले स्वस्थ बनो, और अगर कोई पूछेगा कि स्वस्थ कैसे बनना है सर, तो आप सारे वो ऑप्शन बताओगे कि रेकी सीखे हो, अग्निहोत्र करो, ये जो सारे हम जो सारी साधना वगैरह करते हैं। और उसके रिलेटेड भी सर मेरे पास 4-5 सवाल है जो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो उसका एक सारांश ऐसा निकलता है कि ये स्वस्थ होने के लिए, ये लाइफ फुलफिल करने के लिए, how to form a routine and consistently stick to it. Let me add here, before you go further, don't make it a process. Spirituality is not a process. Spirituality is an understanding. नहीं, एक क्षण बैठो, आंखें बंद करके पूछो मैं क्या कर रहा हूँ। See, basically, even the Reiki seminar starts with this question: What am I doing? Even before the process comes in. ये नहीं पूछोगे तो प्रोसेस में कोई मतलब नहीं। The primary question before doing the process is what am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ मेरी जिंदगी के साथ, मैं क्यों कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। इसका ऑडिट नहीं कोई कर रहा है। Are you getting this point? Somewhere somebody has to really take stock of this. What am I doing every morning? I don't say that you take Reiki daily. I don't say that you meditate daily. You just ask this question daily. सुबह उठ के कि आज मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें उत्तर मिलेगा तो करो, लेकिन तुम सवाल पूछने का हमें डर लगता है। So we don't look within. Are you getting this point? That's all. That's साधना। मैं नहीं प्रमोट करना चाहता कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, बिकॉज हमने हर चीज के प्रोसेस बना दी तो उसके प्रिंसिपल्स हो गए। Get into the principle. The principle is what am I doing? The principle is why am I doing what I'm doing? इसके जवाब मिलने के बाद I think you don't need any question to be answered. All questions will be answered. Problem is we are not asking this question to ourselves. We are asking this question outside. What are you doing? Why are you doing? You doing? No, I do. What am I doing? Why am I doing this? Be accountable to your own self. Understand तुम्हारी ईगो का बॉस बैठा है अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में।
उसको जवाब देना. Have a dialogue between your ego and your soul. That's the meditation. Meditation का मतलब कुछ दूसरा नहीं है. बाकी सारी जो हमने तैयार की है ना, वो तो खाली आई थिंक बड़ी बड़ी जार्गन्स हैं. सापेक्ष मेडिटेशन, निरुपेक्ष मेडिटेशन, all these names, you know, nirvikalpa, vikalpa, savikalpa. That's drop this idea. Just meditate. And that is the simplest thing I'm asking people to do. Don't do Reiki either, but ask this question. Are you asking this question? Then forget Reiki. See, Reiki मैं बोलता हूँ क्योंकि कभी ना कभी ये सवाल उठेगा तुम्हारे. Reiki लेते समय तो कम से कम तुम खुद के साथ होते हो ना, तब ये सवाल उठेगा. Reiki करो इस मैं कहता हूँ so that you are stayed away from other distractions. Because Reiki करते समय तुम दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे. I'm getting this point. बट अगर ये सवाल पूछोगे तो कोई रेकी की भी जरूरत नहीं तुम्हें, कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं तुम्हें. हमने हर चीज को प्रोसेस बना दिया. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ. अंडरस्टैंड योरसेल्फ. योरसेल्फ इज बियॉन्ड द प्रोसेस. योरसेल्फ इज अ प्रिंसिपल. सिद्धांत है, उसको प्रक्रिया मत बना. जो नहीं समझते उनको प्रक्रिया के द्वारा सिद्धांत की तरफ जाना पड़ता है. Are you getting this point? So somewhere I think we need to really look within. And we are looking all around. Pascha, we start with that. So we don't start with the process. So everybody should understand why we not start with the process. अगर कोई पहला सेशन सुन के ये सवाल पूछेगा ना, उसको आगे आने की जरूरत नहीं है. He doesn't have to know what is Reiki, history of Reiki, process of Reiki. दीक्षा कुछ जरूरत नहीं है. मैं हमेशा सोचता हूँ कि 2 सवाल जो लेके जाएगा साथ में, मैं ये क्या कर रहा हूँ और पश्य, बस उसको कुछ जरूरत नहीं है. Are you getting this point? That's why they are the base, they are the fundamental foundations of spiritual practice. Reiki or otherwise. ये सवाल के जवाब नहीं होते हैं, इसलिए हम आगे बोलते हैं कि तुम रेकी करो. लेकिन इसके जवाब जिसके पास आ गए, उनको कोई रेकी की प्रोसेस करने की जरूरत. They become Reiki themselves. They become a flow. They are not separate than the flow. So you don't have to do that process. Are you getting this? खाली 2 सवाल भैया. देख क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं. Be responsible for yourself. Are you getting this point? That is it. लोग तो नहीं करते हैं, बाद में निमित्त होते हैं. टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. जिसको टाइम नहीं है ना, तो संसार नहीं करना चाहिए. As it is, you are falling short of time. You are adding your wife, your children. Time is bound to be under pressure. नहीं करो संसार भैया. किसने कहा तुम्हें करने को? तुम्हारे संसार करने से न करने से बाहर का संसार को कोई बिगड़ता नहीं. Actually, you are adding activity and then saying no time. जिसको टाइम नहीं है ना, जिसको टाइम मैनेज नहीं करने आता है ना, उसको ही नहीं करना चाहिए. पर सर जिसने स्टार्ट किया वो क्या करे अभी? अभी तो समझना चाहिए, उलझना नहीं उसमें. कम से कम न उलझना अपने हाथ में. आई थिंक कृपादीदी है जो लोग इसमें लिख रहे हैं ना चैट में, वो भी जरा तो रिकॉर्ड करना कहीं पे. है सर. They vanish. Yeah. And if I concentrate on that, then there's a problem. Yeah. सर दो सवाल. अभी जैसे कहा कि एक दोनों साथ में पूछता हूँ. Is it necessary to have a guru for life fulfillment? And what is the difference between guru and a judge? I don't understand where the judge comes in picture. Question है तो question आया है मेरे पास. See, judge passes the judgment. Guru does not pass any judgment. The moment Guru starts passing judgment, he ceases to be Guru. Are you getting this? So I want somebody to read and ask me. Are you getting this point? So judge और Guru में कोई संबंध नहीं. Judge can be a guru, but Guru cannot be a judge. Judge is it necessary to have a guru? Judge का काम क्या होता है? कोई गलत है तो ढूंढ लेना और कौन सही है. नहीं, यहाँ सभी सही है. कौन जजमेंट है?
एक ही सत्य है वो, और वो नहीं है, वो ये करता है, जजमेंट करता है, तुम क्यों करेंगे? There's a beautiful Chinese proverb, which says that even the God does not pass judgment till the end of your life. Why should you and me? भगवान भी रुकता है लास्ट मिनट तक, जजमेंट नहीं पास करते, तो हम क्यों जल्दी करते हैं? कौन सही कौन गलत पता नहीं, and Guru will never say that you are गलत. Are you saying that? गुरु इतना ही कहेगा, तुम अज्ञान में हो, तुम ज्ञानी बनो, तो सब गलतियां सुधर जाती है तुम्हारी, कोई गलत है ही नहीं भाई. गुरु अगर गलतियां निकालने लगे तो गुरु गुरु नहीं रहेगा. तो गुरु की सर आवश्यकता है क्या? ऐसा सवाल है. फॉर लाइफ फुलफिलमेंट इज इट नेसेसरी टू हैव अ गुरु? बिल्कुल नहीं है. Guru becomes a burden. Guru becomes a burden at one point of time because he asks some difficult questions to you. It makes you think. That is the biggest problem with Guru. See, we want Guru to give solution. Guru never gives solution. He asks questions so that you can find out your own options, and the options lead to solutions. Questions, options, solutions. That's it. Then it shuns the life. सर, खुशबू जी ने पूछा है, आपने जो बोला कि 2 सवाल, एक पश्या और एक व्हाट एम आई डूइंग, तो ये जो करते हैं तो ईगो और हर्ट के बीच में आता है. Ego or heart? ईगो और हर्ट बीच में आता है. Actually, hurt is not different than ego. Ego ही आता है. Hurt is not different than ego. Ego gets hurt. है ना? तो आता है तो बाजू में करो उसको. सवाल के जवाब तो ढूंढने ही पड़ेंगे तुम्हें. समझो तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारा ईगो बीच में आता है तो खाओगे नहीं, है ना? जिसको भूख लगे ना तो भीख मांगे भी खाएगा, ईगो नहीं आएगा बीच में. इतनी भूख लगनी चाहिए खुद की, आत्मा की इतनी भूख लगनी चाहिए कि हम भिखारी भी बनने के लिए तैयार है. ईगो नहीं आएगा बीच में. नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे नहीं होते, शादी नहीं होती, ये नहीं होता, जमीन जुमला नहीं होता, एक भी इंसान आए नहीं रोते रोते कि भगवान नहीं मिलता. वो जो आए ना तो मिलेगा. The problem is our priorities are all wrong. We are searching for something which we should never search for. And we are not searching for something we should always search for. Are you getting this point? तुम जिसके खोज करोगे ना वही मिलेगा तुम्हें. We are all in the search of sadness and sorrow. So we are getting that. We are search of miseries. We are getting that. और मैं कोई impractical बात नहीं कर रहा. See, you think it is impractical most of the time, you people. है ना? Because your idea of practicality itself is so wrong. मैं समझता हूँ जिसको practice नहीं कर सकते उसको practical क्यों कहते हैं? और अगर practical में आ जाते हैं तो problem क्या है तुम्हारी? I think there's a lot of dichotomy in this. Sir, I'm now going to ask the question without using the word practical, but I'm here trying to explain one real life situation which has been given. One sadhak, he says he's 45 years old. He understands that the goal of life should be to have the moksha. मुझे ऐसी एक सिद्धि प्राप्त है कि मैं जान सकता हूँ कौन सा है. पर फिर भी सर, because of any sympathy, but he has written to me also. Yeah. So what happened? पर वो कहता है कि नहीं, मतलब जनरली ये एक बीच में जो क्राइसिस आता है, मिड लाइफ क्राइसिस जैसा, कि लगता है ऐसा कि अरे हाँ वो ये सब करना है पर कब करूंगा मैं, क्योंकि अभी तो शायद पूरा अर्निंग भी ठीक से नहीं किया है, बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है, फैमिली का भी अभी सारा देखना है, पर साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करनी है. तो क्या मतलब करना है, हाउ टू डील विद इट? नहीं करना है, करनी है, बार बार आते नहीं, यही गलती है. तुम कुछ नहीं करोगे, तुम फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हो, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हो. एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू. तुम कुछ, ये अहम है हमारी, मैं ये कर रहा हूँ, तुम नहीं करोगे ना तो भी होता रहेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समवेयर डूइंगनेस में लिखा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. डोंट डू इट, डोंट डू इट. जस्ट बैठो और देखो क्या चमत्कार होता है. Somebody will do it. You don't have to do it. Just do it. It will happen. And do it with joy. Don't do it for joy. No? That is how it is. करो, तुम्हारा काम तुम करो.
नहीं, कर्म करो तुम और छोड़ दो ना, छोड़ना भी बहुत जरूरी है। हर कर्म को संकल्प बनाओगे तो छोड़ना जरूरी पड़ेगा तुम्हें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समवेयर वो लीक रहा है। 45 इज नॉट अ बिग एज। 42 में तो भगवान बुद्ध भगवान बने नहीं। My sadhana began at the age of 45. So now it is a time for him to come out. Are you getting? Come out of ignorance, not of samsara. You can do a lot if you feel you can. The problem is this: we create our obstacles and we love them. हम ढाल बना रहे हैं उसको, नहीं ना? You remain happy. See, शराबी अगर अपने शराब पी से मस्त रह सकता है. He doesn't feel he is doing anything wrong. नहीं, तो spiritual आदमी क्यों नहीं रह सकता when he is doing nothing wrong? Somewhere our authenticity is gone. Somewhere our own credibility in our own mind is not established. Somewhere we think that we are doing something wrong. So you cannot defend. जब तक वो रहेगा ना, तब तक ये problem. First, have the confidence that I am doing nothing wrong. I am in the lap of the God. What can go wrong? That's the problem. Somebody asked me this question कि when are we ready for the second degree? ऐसे जब बीमार पड़ते हो, कुछ भी होता है थोड़ा मोटा, और तुम्हें रेकी की पहली याद आती है तो सेकंड डिग्री के लिए लायक, डॉक्टर की याद आती है तो अभी तक लायक नहीं, बिकॉज यू आर डिसरिस्पेक्टिंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू एज अ ब्लेसिंग. अभी भी तुम मानते हो कि तुम मरोगे डॉक्टर के हिसाब से, नहीं, तुम मरोगे भगवान के हिसाब से. डॉक्टर कुछ नहीं करेगा. जब तुम्हारी मौत की घड़ी आएगी ना, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करे, ना बचा पाओगे. विल एक्सेप्ट द ट्रूथ. एक्सेप्ट द ट्रूथ. तुम एक दिन ज्यादा नहीं जियोगे, एक दिन पहले नहीं मरोगे. Once that is established, I think everything falls in line. Are you getting this point? कहीं पे हमने तय किया है कि हम सब कुछ कर रहे हैं. मैं ये नहीं करूंगा तो मैं वो करूंगा. अरे क्या तुम्हारे हाथ में है? क्या हाथ में है तुम्हारे? कुछ नहीं. Don't have the wrong plans in your life. तुम मानते हो कि मैं करता हूं इसलिए फैमिली चलती है, बिल्कुल गलत है. ऊपर वाले ने एक दिन एक स्विच ऑफ कर दिया ना, तुम्हारा सारा करना अकर्तापन हो जाएगा. Are you getting this point? And that's a fact. That's the practical thing. Are you getting this? Somebody is running your life is practicality. And understand that is practicality. सर, पर आप जैसे कहते हो कि आप कुछ मत करो, कुछ नहीं करोगे फिर भी हो जाएगा. मैं नहीं कहता हूँ कुछ मत करो, मैं इतना ही कहता हूँ आनंद से करो, पूर्णत्व से करो. मैं नहीं कहता हूँ कुछ. I don't want you to drop activities. I want you to do activities out of joy, not activities for the joy. उसमें disappointment नहीं, उसमें disillusionment नहीं. पहले सुखी बनो ना, सुखी बनो, समर्थ बनो और खेलो, लड़ो. समर्थ बनो. फिर कंपैरिजन सर, जब अगर कोई बाकी जो लोग हैं, मतलब एक ऐसा भी सवाल है कि तो फिर हम साधना में हैं, आनंद में रहते हैं, तो ज्यादा मतलब जो कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज हो रहे हैं वो तो ठीक है, पर फिर लोग कॉम्प्लेसेंट भी कह सकते हैं ना कि यू आर अ कॉम्प्लेसेंट, यू आर नॉट अ गो गेटर. सो हाउ टू such kind of situation? Don't may say that because you are lacking conviction. You give a lot of importance to what people say. क्या शराबी कुछ सोचता है लोग क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ सोचता है? नहीं सोचता है ना. तो हम क्यों सोचे? हमारा फोकस बाहर की तरफ है because internally we are not convinced. Get convinced first that you are doing nothing wrong. The problem is लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लोगों को पास वक्त नहीं है. You are just projecting your thought outside because you are afraid of asking yourself this question. You are using people, you are misusing people, you are abusing people. That's the problem. कुछ नहीं होगा. Are you getting this point? कुछ नहीं होगा. आनंद से करो, आनंद से जियो. सर बहुत से सवाल आए थे जो ऑलमोस्ट कंपाइल करके हमने पूछे, एंड एज वी आर आल्सो गोइंग टू कीप सम टाइम ओपन फॉर द लाइव क्वेश्चंस. तो अभी मैं लाइव क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं. सो पार्टिसिपेंट्स कैन आस्क द लाइव क्वेश्चंस. पहला आई थिंक वैशाली हैज रेज्ड अ हैंड. या वैशाली. जय गुरुदेव गुरुजी.
जय गुरुदेव वैशाली। ये सवाल एक्चुअली शायद मुझे आंसर मिल गया है, आपने इतना अभी जो बोला है उसमें, बट फिर भी मैं अभी पूछ लेती हूँ. It's about the desire. When you were talking about the desire, then this question came to mind actually. कि अगर हम लोग ये डिजायर ड्रॉप करते हैं तो डिजायर इज लाइक देन इट हेल्प मींस हम लोग एक गोल सेट करते हैं, राइट? अगर डिजायर होती है तो वो मींस डिजायर लाइक motivation behind achieving your goal is gone if we drop the desire, right? So is I that don't understand right that. to have desires, or is it that we do not need to achieve anything, as it is said that we are already complete, तो हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं है? ये मेरा पहला सवाल है. और दूसरा उसी से आगे है कि अगर ये हम लोग how and should we motivate kids to achieve goals, क्योंकि then they become desire oriented, right? अगर हम लोग उनके सामने गोल सेट करते हैं. Vishali, there are two questions. There is something behind desire, something that drives desire. What is that? You already passed a judgment, desires are required for the life, then nothing can be done. Drop that idea of having desires to achieve something in life. Have all the people having desire are happy at the end of the life? No, not necessary. Not necessarily. And where is the desire coming from? Where is it coming from? That you are feeling I'm short of something. By achieving that, I will feel complete. Have you become complete in your life? No. So much in your life, but are you happy? Ask that question yourself. Have you achieved what you wanted to? So people don't stop. No? They want something more. They want something more. That means they are still chasing their incompletion. They still feel incomplete in spite of having a lot of things in life. And every time you got that, you thought, ye milne ke baad, I'm going to be complete. But you're not. And the same thing is going to happen in future. Till at one point of time, you will realize that you were chasing the incompletion, or the completion rather, when it was actually not there. You're chasing something which is not there, which is already within you. It's a part of you. Your completion is chasing the incompletion. That's a problem, because you don't know that. No? So it's okay. You don't need a motivation from desires outside. The motivation is inside. If I'm happy, I already have the motivation. My happiness is a motivation. Somewhere I think we already have decided कि desire होनी चाहिए, fulfillment होनी चाहिए, नहीं होती तो frustration होना चाहिए. See, we have already defined it wrongly. And then we are defending it. We have created a law and passing a judgment based on our own law. Right. How can you do justice to your soul? No, somewhere I think God has given us a lot of uncertainty in life, only for the reason to tell you that nothing is in your hand. Are you getting? The birth was not in your hand, and so the death will not be. And in between the life will not be. All that remains is, I belong to Him. I belong to that soul which is already connected, which is already complete, which is already vast and infinite. And now I'm here to play. That thought you nurse, itself will be a stronger motivation than any other motivation in life. Am I making a sense, Vaishali? Yes, Guruji. And I'm just living in the world. I'm not renounced the world. I'm not going to Himalayas. I'm not sitting the apex of Kailash and telling you this. No, I'm in the midst of all of you. So don't be under impression that I'm not practical. I'm living as much as you do. But still, that doesn't bother me. Are you getting this point? I'm not anxious about my future because I know somebody looks after me. And when somebody looks after you, why should you be concerned? अर्जुन जब कह सकता है कि कृष्ण जागा है तो अर्जुन सो सकता है. अर्जुन सोएगा, खाएगा, पिएगा, लड़ेगा, सब करेगा, लेकिन कृष्ण जागा है. Right. The very fact, I think we have lost the touch with ourselves. Are you getting this? You have all the ammunition and you don't know that. And then you are fearful of the enemy, which is not there. Yes? Yes, Guruji. First, drop the idea that you need a desire to get motivated and you need motivation to achieve a goal. See, goals, who defines the goals?
World or you? My goal was pretty simple right from my childhood. रात को अच्छी नींद आनी चाहिए. रात को I take my audit. Am I happy with whatever I have to do in the day? I have done it. I go to sleep. Ask yourself only question. Are you happy today? Happier today than yesterday? The answer is yes, you are successful. Now measure the goals in terms of your happiness, in terms of your peace. Have I lost my peace a bit? No. Well, I'm happy. Go to sleep. Another day will begin. Are you getting this point? So Right. somewhere we are going by the goals that the people have set, because the world says you should have a car, you should have this, you should have that, then you are successful. But the world keeps on changing the benchmark, आज वो कहेंगे 3 गाड़ियां जिसके पास है, BMW होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए और एक कोई डैटसन होनी चाहिए तो ही तुम सक्सेसफुल हो. कल बोलेंगे नहीं नहीं ये क्या, अभी नई कार्स होनी चाहिए. You are chasing a dream. You are chasing a mirage. Because world will change their parameters, but you don't have to. You cannot be responsible for 2 goals at a time. You have your own goal. Set your own goal and achieve it. You are successful. World may or may not tell you. प्रांजल दादा ने कहा बोलते बोलते मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. यस आई एम, बिकॉज आई एम वेरी पीसफुल. इन स्पाइट ऑफ डूइंग माय बिजनेस, मैंने किसी को चीट नहीं किया, किसी ने मुझे चीट नहीं किया. नहीं, आई हैड टेकन अ लोन फॉर माय फ्लैट, इट इज डन, एवरीथिंग वाज डन वेल इन टाइम. मैं रीपे कर दिया, मैं आराम से जी रहा हूँ. दैट्स सक्सेस फॉर मी. But in terms of probably the world's eyes, I'm not successful because I don't own more than 5 houses and 10 cars. Yes, world parameters are so different. But I think I'm accountable to me, not to the world. Are you getting this? Right. World keep on changing their parameters. You don't. Your parameter is peace and happiness. No? I'm getting a lot of love from the people. That's all. What have I achieved? मैं लोगों को वही पूछता हूँ कि मुझे स्वामी ने ऐसे ऐसे अनुभव दिए हैं जो बड़े बड़े मिलियनर्स को नहीं और बिलियनर्स को नहीं मिला. When I traveled once between San Francisco and San Jose, the first part, where we were 16 people between San Francisco and Michael Jackson का गांव को था नाम, I forgot the name. And from there to the San Jose, for next 50 minutes, I was the only one in the flight. And I probably when Mukesh Ambani may have to think 10 times to hire a flight to achieve. मुझे मिला. No? Right. During one of the trips to USA, they made me stay in what is that? Hyatt. Yeah. And there was a suite booked for me, 3-bedroom car. I had 3 TVs and everything, gadgets. And then I realized that it costed $360 a day. I stayed for 5 days. Multiply, calculate the cost. I got it. I didn't fight. Effortless. Somebody wanted me to have that luxury. Somebody gave. I never had to struggle for that. Can you imagine that? अगर 50 rupees का रेट भी पकड़ो उस टाइम का, 360 multiplied by 5 is almost about $1,800. So just imagine, I mean, could I have spent that? But no, but I enjoyed the results now. I didn't have to go through the process. अगर स्वामी ऐसे देते हैं मुझे, मुझे किस चीज की फिक्र है मुझे? In fact, many people having, I think, millions of people who have got probably millions of time money than I have, probably they did not have this. I did. Are you getting this point? And it's all happened n number of times. It's not 1 or 2. Are you getting this point? That is all of what they say there, to love and have compassion towards me, affection towards me, without me doing anything for you people. अगर मैं मेरे experiences बता सकता हूँ ना तुम्हें, I cannot teach you from others' experiences. And my experience is that life is a beautiful experience. Life is a huge enrichment. What is the problem? Are you getting this? Yes, the 27 years, 28 years in Reiki, there must have been at least 5 to 6 incidents in my life. If any normal person would have been there, I call normal because the results were abnormal for me. You would have been rushed to ICU and probably you would not seen me here. I would not have been in this life if I had gone that way. But somebody healed me all the time. My soul healed.
How do I say that you've got to rush to the hospital for every small thing? I never nursed the thought. I was prepared to die because that was not in my hand anyway. And somebody prepared to bring me back. That force is definitely better than I do. नहीं? मेरे जिंदगी में जब महाकाल है तो मुझे किस काल की भी See, somewhere I think you need to really understand. And this is practical because I lived it. I lived through this. I'm not talking of something imaginary or something that happened in my dream. I can teach you from my experiences and my experience. So that is, so why should I call? I mean, everybody else can say life is a wretched, life is motivation oriented. You need to have a goal. I never had a goal. And still I achieved every time what I deserved. Are you with me? Yes. Yes. I did Yes. achieve what I didn't deserve. Fine. So why should I expect something which I don't deserve? The problem is you don't deserve certain thing and expecting that to happen. And when that doesn't happen, you get disillusioned. I'm a pretty simple guy. Okay. I know what I deserve. उसको मिलता है मुझे उतना. That's success. Getting what you desire is not a success. Getting what you deserve is a success. Very So nice. we desire driven. We deserve driven. Are you getting this point? Yes, sir. Ashok Thatte has a question. Yeah, Ashok ji. Yes. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Guruji. Guruji, I have a question. Haan ji. How do you relate fulfillment of life for two categories of people? One is sadhu, santa, sannyasi, and people in the life. Parivar. Sadhu, Santa, Sannyasi and common people, is it? Yes. Sadhu, Santa and Sannyasi have known that they were complete. Samanyan insan doesn't know he's complete. Okay. Both are complete. One I who mean, knows they that have he's complete is Sadhu Santa, and one who doesn't know that he's complete is a Samanyan insan. Otherwise, there's no difference. Right. It's a small knowledge, which makes a difference. And one more question. What made you to give up everything? I never gave up everything because nothing belonged to me. Everything just came because when I was born, nothing was with me. So the No, I mean, question suddenly didn't arise. No, I didn't give up anything. So let us not glorify. Okay. I gave up nothing. My wife was there, my child was there, my house was there. Nothing I gave up. I gave up certain things like my car because I couldn't afford. Simple. And I was very frank enough to say I can't afford. I didn't want to earn for my car. I didn't want to earn for my ego. I didn't want to earn for my neighbors to say he has a car. No. I told my neighbors, see, in 1992, I sold off my company. And the car belonged to the company. So I went and gave it to the new owner. He said, no, keep your car. This is your car, we all know. But I said, company is paying for it. So it's not mine. Keep it with you. And that night I came home without a car in a train. And all my neighbors assembled and they said, what happened to your car? I said, I can't afford. So I gave it back. They say, you must be joking. You must be buying a higher car. So I'm serious. That night I slept well and they lost their sleep. The problem was that by saying the truth. But then I saved 10,000 rupees a month, which is going to be, I had to spend. And then I was happy traveling in a train because I could get a lot of time to read. I could get a lot of time to observe people. I could reach in time. Because then I realized the car was a luxury for the people, not for me. It was not convenient to me at all. Are you getting this point? Yes. So somewhere that was a crucial moment in my life, Ashokji, because I could give up, it never belonged to me. I was not born with the car. Car came to me because of certain activities. When the activities were dropped, car went away. Are you getting this? So I left nothing. Yeah. I think when we say I leave this, I left that, I think it's a glorification of your own life. Start with an idea that nothing belongs to you. Everything that is there is going to perish at one point of time in any case, either forcefully or willfully. Right. It is going to be permanent.
Yeah. Okay. That gives you a lot of peace and happiness. Yeah. 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 Okay. Sure. Sir, Ashish has a question. Yeah, Ashish. Great, yes. Don't Jai ask me Gurudev, Guruji. whether I sent you editorial. No. हो I'll सर send you ते tonight. आहे. I'll send you tonight. I'll send you tonight. Let me promise. येस सर, येस सर. तर मी आणि प्रणवती दोघंही आम्ही इथे बसलोय, आम्ही ऐकतोय तुमचं. आणि एक क्वेश्चन मला आणि प्रणवतीला दोघांना आहे की वी हॅव हर्ड that generally when we try to impress someone, there is ego involved, but we didn't understand the statement. We read somewhere that when you're trying to impress, there is some ego involved. How is it that? But when we are expressing, there is no ego, because basically. So just wanted to understand this statement which we read. Honestly, I mean, I'm not written that statement, so I really cannot answer you, because the one who wrote should be responsible for explaining it. You're asking for explanation from me about something which I have not done. I don't know why you should have written that, because generally the expression comes out of ego, not the impression. Impression is what happens after you express. No, if you start expressing with an idea to impress people, no, that is a problem. Express yourself. The idea is not to impress people. The idea is to express yourself. Are you getting this point? So somewhere that expression with authenticity, with genuineness, with flexibility, with fluency, that makes a difference. So somewhere, I don't know why impression should be with the ego and expression should not be, because they're not separate. Impressions lead to expressions. Without impression, the expression cannot happen. And without expression, the impression outside cannot happen. There's an impression inside, there's an expression, and there's an impression outside. So impression is on either side of expression. Are you getting this point? But the first impression is something about your implant, something of your sanskara, something that belongs to your karmas. That creates your expression. And that creates an impression or otherwise on the people outside. No, but the inner impression itself is not pure. Outer expressions and outer impression cannot be pure. Then you are trying to impress people without having the right expression and having the wrong expression with the wrong impression. I think everything goes wrong in life. So I don't understand why the author should have written. Probably we can ask the author. You should be able to answer. Yeah. If I had said that, probably I would tell you. Yes, Ashish? Is Ashish there or not? सवाल पूछ के चले गए आशीष जी? नहीं, ही इज देयर सर. शायद म्यूट हो गया. 1 मिनट. म्यूट हो गया. म्यूट हो गया. हाँ सर, म्यूट हो गया था. हाँ सर, समझ गया सर. उस ऑथर को ही पूछते हैं. हाँ, पूछना चाहिए. How can somebody else explain what he has said? Because he might have said in some other context, The problem is that we are making spirituality difficult because we are talking out of context most of the time. And that is why my favorite Siddhanta is that, nothing is wrong with spirituality except our understanding. We are misquoting. See, no guru worth his salt has really written anything. He has spoken, but he has spoken in the given conditions for a chosen people. He has not talked to the universe. No guru talks to the universe. He talks to only the few people who are interested in listening to him. And unfortunately, we read this in the out of context, and then we get confused. I tell everybody the story. One of our sadhaks, who happens to be a master today, and we were together in one particular seminar in Mumbai. It was a lunchtime, and there was a beautiful book of Rajneesh lying on the cot. And while having a lunch, waiting for the lunch, actually, my assistant, that time he was my assistant, now he's my colleague. He looked into the book and he read, that was Rajneesh's book. He read the first sentence was, do not believe in anyone, do not believe in anything. And for a moment he stopped and he looked at me. So I realized there's some confusion in his mind. I said, what happened? He said, if the author writes, do not believe in anything, do not believe in anyone, why should I read this book? How can I believe in? I said, shut the book. Shut the book, turn it around, look at the back cover, what they've written, and read out. He read out.
This book was written by Osho Rajneesh in 1973 in Los Angeles for his senior disciples. I should stop. I'll ask you 3 questions. Are we in 1973? He said, no. Are we Rajneesh's senior disciple? I said, no. Are we in Los Angeles? He said, no. Then I said, this book is not for you and me. We get confused when we are reading out of context. It was meant for them. उसके आगे और पीछे भी कुछ हुआ होगा ना? See, only that context you cannot read. See, everybody is in a hurry to express the thoughts and spread, like what's happening in the WhatsApp now. People don't read, they just pass on, without reading. So everybody in a hurry. I think Rajneesh probably never told him to write and publish. Everybody is publishing after Rajneesh went out. If he wanted, he could have written. The very fact that he has spoken to few people under certain given set of conditions is not valid for everybody else, because they don't have the right context. A contextual reading, contextual understanding is very, very essential. And we are leaving most of the time out of context, because there are enough books on. See, you know something, Ashish? They say in the Vedic time, they said only few people have the reading abilities. Reading also requires a special facility in the brain, which is not for everybody. That's why in the ancient times, only some people had the ability to read, and everybody has the ability to hear and listen. Shruti, Smruti, Puranokta. And in Shruti, Smruti, mein kahin pe drishya nahi tha. My friend, Dr. Subhash Gokhale, who was an eye doctor, told me once, see, human eyes are not designed to read. He says, no eyes are designed to read, not even animals, but animals, at least, they don't read anything. We have made a mess of our eyes by reading something. We are not supposed to read. So only some people who are elevated consciousness have the ability to read. Aaj har ek jan padh raha hai. And that may be going against the nature first. No, somewhere I think we made a mess of that. So somewhere that galat mein ye aaya, probably this person has written, probably he never wrote, he just said, and somebody wrote, and you read when it was not actually meant for you. And now you are confused and asking me this question. Are you getting this, Ashish? So somewhere I think we need to see what is the right context. Out of context, anything is messy, chaotic. Within the context, I think it makes a lot of sense. So I think probably our context is wrong. No? Are you getting this point, Ashish? Yes, Guruji. I think it was said in different contexts. उसके पहले कुछ बताया होगा, उसके आगे कुछ बताया होगा. This may be once. I think what we are doing like a TV journalist. Pick up that bite and then repeat. If I say I don't like Pranjal Joshi because he is not using his full potential, they will just pick up the word. I don't like Pranjal Joshi. I don't like Pranjal Joshi. Sir, openly confirm Pranjal Joshi is not like that. But what did I say? That he has tremendous potential. And he is not using. That's why it's an appreciation or it's a criticism. But if you quote me out of context, Pranjal और मेरे बीच में दुराव आ जाएगा. Are you getting this one? That's what is happening. We are all communicating out of context. That is the problem. Yeah, Ashish, I hope it answered your questions. Sir. Thank you, sir. Thank you, Ashish. Sir, there is one more question. Shweta ji is asking why there is so much of suffering for some people. That reminds me of a story. I'll answer in a story. In Europe, there was a barber shop, saloon. And one person like you and me, Pranjal, went there, who believed in God. And the barber kept on saying there's no God in the world. And this person was cool and quiet. He said, I believe there's a God. Then he asked barber, why you are saying that? He says, then why so many miseries in the world, so many people suffering? That fellow keeps quiet, pays when his job is done, goes out, and after 10 minutes he comes in with one beggar whose hair are all split and sprayed, whose beard is unmanaged. And he says, loudly he says, I think there's no barber in this city. And the barber says, why do you say that? I'm here. And I said, why this person is like this? Why is not hair are so well kept? He said, no, because he never came to me. He said, that's the answer. That's the answer. Only God being there, it doesn't help.
No, you have got to realize the God within you. God is not there. God is here. God is not out. God is in. If you don't recognize the God in, probably I think the problem begins there. Yeah. That is the problem. We are all trying to read. We are believing the images are truth. And when you see the image of the God, it looks like a dog. So there are enough dogs, but no God. Yeah, because we are living in the imaginary world. सबके आईने में God दिख नहीं रहा है, dog दिख रहा है. You have forgotten that what image shows is a reverse image. So when you see a dog, think of God. Are you getting this? Yes. I think they're all illusory. Yeah. So I think that should answer the question to Shwetaji. She will ask this question. Yeah. Sir, thank you very much. Yes, Pranjal. Fulfilled. That's all. I was thinking I was sitting in Aapki Adalat वगैरह ऐसे कुछ संभव. I think Rajat Sharma does a better job than you. He grills. I was not grilled. Yes, sir, because getting a feeling like taking an interview of a Narendra Modi. No. Narendra Modi is a very big personality. He's achieved enough in life. Yeah. The only thing common between Narendra Modi and me probably is the age. He has a much larger impact on the world. इधर कोई सवाल है? I'm finding difficult to read it. सर, विवेक चौधरी जी कुछ पूछना चाहते हैं. अच्छा. विवेक जी, can you write it on the chat box? Or you can ask. हाँ, or you can raise your hand. We'll unmute you. Vivek ji, you can just raise your hand. एक जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो. अच्छा, while doing Reiki, where should we focus on while giving Reiki to our body parts, our palm, fingers, or our body part? So you don't have to focus anywhere. Chaudharyji, you don't have to focus anywhere. And if at all you have to focus on your soul. Focus on what is flowing through. Focus on how you are breathing. Focus on your breath. Focus on something which you cannot see otherwise. Yeah, and then suddenly you realize what you are. Don't focus on anything. Don't focus on the process. Focus on that content. And that should help. Otherwise, you don't have to focus anywhere. Because the focus is the purview of the mind. And the mind is bound to go anywhere. Let it go. Reiki is a freedom of mind. And when you talk of focus, you are trying to make a mind a bonded labor. Mind doesn't like a bondage. Give it a freedom. And then the flow will be free and flowing. Yeah. So don't focus. Yeah. Sir, Shweta ji has a question. Yes, Shweta. जय गुरुजी. सर, मी पहिली माझी हे झालेली आहे आणि खूप वर्ष झाली मी प्रॅक्टिस नाही करत आहे. तो कॅन आय स्टार्ट इट अगेन? Yeah, you can start anytime. Yeah. Okay, means I again have to take diksha for that? No, you don't have to. You don't have to. You start Okay. from today. Today is गुरुवार है. आज रात को सोने के पहले रेकी ले लो मस्त. It will be. Okay, thank you Guruji. Thank you. Thank you. स्वरूप जी, स्वरूप विश्वास. नमस्कार गुरुजी. नमस्कार स्वरूप जी. अच्छा, आपने कुछ देर पहले किसी का सवाल पे एक जवाब दिया था. मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहता हूँ. आपने बोला था कि एक सेंट और एक सामान्य मनुष्य में इतना ही अंतर है कि उनको पता है कि ही इज कंप्लीट एंड एक सामान्य आदमी को पता नहीं है कि ही इज कंप्लीट. सर, इसमें शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसलिए कि मतलब सिर्फ जानना कि मैं कंप्लीट हूँ और सिर्फ नहीं जानना कि कंप्लीट हूँ. जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ की बात कर रहा हूँ. उसमें जानना आ गया, मानना आ गया, करना आ गया. अच्छा. समझ, अंडरस्टैंड.
समझ मीन्स देखिए, अगर एक एक साधु है जिसने इतना तपस्या किया है साल भर, जन्म जन्म से, शायद फिर उनका कुंडलिनी जागृत हुआ है, वो शायद मोक्ष भी पा सकता है 1 या 2 जन्म में, और एक सामान्य मनुष्य वो सब कुछ नहीं कर रहा है, आम जिंदगी जी रहा है, तो फर्क तो है ना सर उसमें, मतलब। नहीं ना, फर्क नहीं है। शायद ये तपस्या आपने पहले की होगी तो ये समझ आ जाएगी। आप जिसकी तपस्या अभी ये जन्म में देख रहे हैं, शायद आपको क्या पता कि आपने पिछले जन्म क्या किया। ये सवाल जब मन में आता है ना, तो उसका मतलब कहीं पे आपकी ऑलरेडी तपस्या हो चुकी है, अभी खाली एक समझ की बात है। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे जैसे पातंजलि कहते हैं कि वैराग्य, अभ्यास और ईश्वरी प्रणिधान, ये 3 चीजें हैं। वैराग्य और अभ्यास नहीं भी करे और ईश्वरी प्रणिधान हो जाए तो हमारी समझ आ गई। समझ के लिए कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, समझ के लिए खाली ओपननेस की जरूरत है। ये ध्यान में रखना। प्रॉब्लम है कि हम सब जानते हैं कि महात्मा है, हम मानते नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम जानते हैं और व्यवहार में ये मानना जरूरी है। अध्यात्म में जानना जरूरी है, केवल मानने से कुछ नहीं होगा। मैं गीता को मानता हूं, लेकिन जब तक मैं नहीं जानता, मैं अध्यात्म में आगे नहीं जा सकता। Are you getting? ठीक है, दुनिया में हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और जिसको अध्यात्म कहते हैं उसमें हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं, तो फेल्योर, दोनों बाजू में फेल्योर है। अच्छा, Are you getting this point? हाँ हाँ, कहीं भी जानो तुम कौन हो, तो व्यवहार और अध्यात्म की भीतर की जो दीवार है ना, टूट जाएगी। ठीक है गुरुजी, जानना नहीं चाहिए, because जानने में जिम्मेदारी है, मानने में जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। Are you getting this point? Yes. Yeah, Kirti ji, you can unmute and ask your question. Pranams, Guruji. This is Kirtana from Chennai. I learned Reiki from you in 2002. And I'm really 2002 when I was like nearly 13 years old. I'm really thankful. To be honest, I have no questions, but I'm really thankful that this universe actually helped me learn Reiki. And my sincere request is, like, please come often and enlighten us. It is like a pleasure to listen to you. You're from Chennai, right? Yes. I learned from this. You cannot call me to Chennai now. I am right now. Nice to talk to you after 20 years, 2 decades. I'm very happy you have got that spirit still kindled within you. I'm very happy. I'm really happy to talk to you. Many times you feel there are no contact for 20 years. That means somewhere you have lost the track, but you are not. You're very much on the track. I'm very happy to know that. Yes, sir. Thank you so much for saying this. Thank you so much, sir. Thank I'll you. definitely consider your request. The problem is that, Chennai, I think most of the people that we have today, the sadhus, they don't understand English. They understand only Tamil, and I cannot talk Tamil. That's the only problem. Before it was Jayanti Karthikeyan ma'am who arranged for. Yeah, she used to arrange earlier. Now it is Arunaji who is looking after the Chennai center. Okay. And, till about 2006, 2007, myself and Dinesh used to come regularly. Practically every 2 months, I think we were there in Chennai. And we had a very large group. That particular segment was, I think, multilingual. They understood English very well, so we could relate. But thereafter, I started realizing the wave started moving toward the vernacular. And that was the only thing which actually stopped me from coming to Chennai. Because I could never learn that language, unfortunately. That was a barrier in teaching for me in Chennai. Yeah. But we were all so lucky to learn from you. I hope you can rekindle those people from those batches. I'm looking for someone to do that. And I'll come for nothing else but to meet all of you. Sure. We want to revive Chennai. Select some people who speak English and then invite Guruji. And even those who learned before, collect them together. I'll be very happy. Then I won't come to teach, but I would just come to be within you. I'll be very happy to meet all of you. I'm missing Chennai very much in my life. Okay. I think this is the second offer during the day for me to come to Chennai. One of the others told me he is going to Chennai on 26th to visit Iruvannamalai. So he invited me. He says, can you come with me? But unfortunately, I'm tied up on the
last day of the year, this month. So I had to deny, but I think this is the second time, so I should listen to Chennai now. Chennai is sending some signals. And I can see Gajalakshmi ji very happy. Gajalakshmi ji, group तैयार करो, हम आएंगे. She is very ebullient. Gajalakshmi ji is dancing there. I think I met her in Aruna ji's house. Yeah, is it so? In Bangalore? Oh, in then Chennai? no, in Chennai only. Sorry. Then I met someone like her. I'm sorry. यस गुरुजी, आपको देखने के लिए बहुत तरस हूँ मैं. हम लोग सब चेन्नई वाले सब वेट कर रहे हैं. आप तो चेन्नई वाले बुलाओ, मैं आ जाता हूँ. हाँ यस गुरुजी, कभी भी आ सकते हैं. ऑलमोस्ट एनी टाइम. Okay, सब तैयार है आपको देखने के लिए. very good, very good. Don't insist that I learn Tamil to come there. Huh? नो इश्यूज गुरुजी. अब आके वाला रुकेंगे उतना ही बस हमको. आपको Very good, देखेंगे. very good. Thank you. Yes, thank sir. you. Jai Gurudev. Thank Thank you very much. Thank you so much. And और Thank you very much. शिकागो के लिए भी हम वेट कर रहे हैं गुरुजी, रिकिंडल के लिए. oh, चलो ठीक है, आ जाएंगे. यस प्लीज. Thank you. आज एक पर्सनल था. गुरु चरित्र शुरू कर रही हूँ गुरुजी पढ़ने को. आज थोड़ा लेट हो गया, बट आई विल स्टार्ट. प्लीज सेंड ब्लेसिंग्स इन रेकी. Start करो. थैंक यू गुरुजी. जय गुरुदेव. Some MP, member of parliament, is there, raising hand. Let it be a last question from MP, Pranjal. Okay, sir. Okay. Yeah. Please, not be denied. MP. जय गुरुदेव गुरुजी. ममता हियर. Oh, Mamta, you are the MP. गुरुजी आप कनाडा भी आना चाहिए आपको. मुझे बुरा लग गया. आप सबको बोल रहे आऊंगा. आपको भी बोलता आऊंगा. आओ गुरुजी, मैं 4 साल से सुन रही हूँ. चलो मुझे भेजो, आप वीजा नहीं भेजा अभी तक. इमीडिएट भेजूंगी गुरुजी. इन्विटेशन लेटर भेजो, वीजा के प्रोसीजर को मैं आ जाऊंगा. गुरुजी अभी आपको आना ही पड़ेगा. हाँ, आना ही पड़ेगा ना, तो आएंगे जरूर, क्यों नहीं. मैंने कहा ना कहा. यस गुरुजी. है ना. या जरूर. ऐसा नहीं ना कि यूएस वीजा एक जरूरी कनाडा आने के लिए. नहीं गुरुजी. कनाडा तो कोई भी आ सकता है. वही भी आ सकता है ना. यस. ओके, चलो आ जाएंगे. सर आपके लिए वीजा की जरूरत नहीं है. अरे नहीं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानती ना. आपकी गवर्नमेंट हो तो बात अलग है. तो टीडी के बदले आप आ जाओ. मैंने याद किया, मैंने आपको देखा है. हाँ जी. सो आप कहीं पे भी पूछ सकते हो गुरुजी. ये विश्वास. चलो ठीक है. Yes, sir. Jai Gurudev. Thank you to all. Thank you so much. Thank you very much for sending the questions. Thank you for joining. Inviting me. Thank you, DSP for inviting me and giving me this open. God bless. Thank you, sir. Sure. Thank you, Gurudev, sir. Enjoy the full moon. Yes. Okay. Thank you so much. Bye. And now we'll be closing the meeting. Thank you very much for joining. Thank you for arranging this, Pranjal Dada. And thank you, Guruji, for coming. It was really nice session. Thank you. Jai Gurudev.